So again, there are certain things which are important in the book. Paradise Lost is an epic poem by John Milton. So Milton was born in 1608 and died in 1674. So here is a quick view about John Milton, that he was born in London to his parents, John and Sarah Geoffrey Milton. In 1625, he went to Christ Church College at Cambridge University. In 1625, he gets suspended from college after an argument with his tutor. So since he was having a rebellious nature, which he shows in the character of Satan, he portrays himself in the character of Satan sometimes. This is what the critics say. In 1673, he lectures. The poem was written by him. It was an elegy for his friend Edward King, who was drowned 3 months earlier. So Lycidas was about him in 1637. In 1639, he composes another great poem, and Epitaphium Demonis was an elegy for his best childhood friend, which was written by John Milton in 1639. In 1640, King Charles I was publicly beheaded. सर काट दिया गया था उसका. और जो क्रॉमवेल था, ओलिवर क्रॉमवेल, उसने उसको absorb कर लिया, assume कर लिया power को. So Milton supports the removal of the king. जो उसके some critics say that Milton depicted the character of God in Paradise Lost as Charles I, and he himself was Satan. He was discussing himself as Satan. In 1641, civil war हुई इंग्लैंड के अंदर, और उसके आगे वो सिविल वॉर बहुत ज़्यादा हीट अप हुई. इसने फिर उसमें पॉलिटिकल इश्यूज लिखे ऑफ रिफॉर्मेशन, adventurism, of epistocracy, the reasons for church government. In 1652, he was blind. So it is important here, as far as Milton is concerned, कि 1652 में इसकी जो आंखें थी वो चली गई, eyesight चली गई. And in 1659, following the restoration of Charles II to English throne, Milton is arrested and imprisoned for about 2 months, क्योंकि ये चार्ल्स I के अगेंस्ट था. तो चार्ल्स II आया तो मिल्टन को जेल जाना पड़ा. In 1667, Milton's masterpiece Paradise Lost comes. So ये जो था Paradise Lost, ये 1667 में लिखा गया, when he was blind. In 1671, he publishes in 1 volume the poems Paradise Regained and Samson Agonists. So ये जो Paradise Regained था, इसकी 4 books थी जो इसने लिखी. Paradise Lost की initially 10 books थी, जिसको बाद में इसने 12 books पे comprise किया. And 1674, Milton finally dies, और ये भी Westminster Abbey में Poets Corner में दफनाया गया, जहाँ पे Chaucer को दफनाया गया था. So Paradise Lost itself is an epic poem. It is written in blank verse, and originally it had 10 books in 1667, and with books 7 and each 10, they were split into 2 parts, and afterwards these books were in 12 in number. It carries 10,565 lines in the second edition. Okay, 1674 में इसने present किया. पहला edition 10 books का था, दूसरा 12 books का था. So total Paradise Lost की 12 books हैं. We are concerned with book 1 and book 9, which are rather very important. So the theme is very important, and it keeps coming in so many papers. So it is justifying the ways of God to man. So just justifying the ways of God to man means that Milton wrote this book. Like again, there is critical discontinuation about what he said, or since critics are
varying in their thoughts. Some say that he was writing about favoring the god, and some say since God represented Charles I, so he was opposing him. But in fact, the theme itself says that since mankind gave a bad gesture to God, उन्होंने नाफरमानी की, तो खुदा ने जो इंसान को जन्नत से निकाला, खुदा अनजस्ट नहीं था. सो उसमें ये मिल्टन बता रहा है इस पूरी एपिक पोइट्री में कि जो खुदा ने किया इंसान के साथ, खुदा ने ठीक किया. So the poem is in blank verse. This is an epic poem. Epics normally blank verse में लिखी जाती हैं. So epic के बारे में बहुत सारे questions आ सकते हैं. So epic is a long narrative poem. बहुत ज़्यादा लेंथ पे होती है. इलियड की 25 बुक्स हैं, इसकी 12 बुक्स हैं. So it is really a long poem. और ये ज़्यादातर सुनाने के लिए लिखी जाती थी कि स्टोरी की फॉर्म में सुनाई जाए. It always contains long travel, कि एक मैसिव ट्रेवल होता है नॉर्मली बाय सी, लेकिन उस जरूरी नहीं कि समुद्र के जरिए ही हो. तो इट इज अ ह्यूज ट्रेवल जिसमें जिस तरह इलियड में जो ट्रॉय की तरफ जो ग्रीक्स हैं 1000 शिप्स डाल देते हैं समुद्र में, इफिजनाया की कुर्बानी दे दी जाती है, बहुत कुछ होता है रास्ते में. कैरेक्टर्स आर वेरी टॉवरिंग इन एनी एपिक, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहानी आप पढ़ने, सुनने, लिखने, देखने जा रहे हो, तो उस कहानी में हमेशा कैरेक्टर्स का टॉवरिंग होना जरूरी है ताकि हमारा इंटरेस्ट मेंटेन रहे. तो जब एक इसमें असल में अगर हम इसको अपने तौर पे देखें तो ये सैटर्न और गॉड का तो मुकाबला कोई नहीं बनता, लेकिन जब गॉड का मुकाबला है तो इसीलिए सैटर्न का कैरेक्टर इतना जाइगेंटिक बना के दिखाया गया ताकि थोड़ा सा चलो टक्कर की बात लगे. मैसिव वेपन्स होते हैं इसमें. गॉड अपना थंडर यूज करता है. सैटर्न का जो शील्ड है सूरज जितनी होती है, टॉलेस्ट पाइन ट्री से बड़ा उसका नेजा होता है. सुपरनैचुरल बीइंग्स अक्सर इंटरवीन करते हैं एपिक्स के अंदर, बल्कि लाजमी इंटरवीन करते हैं. पैराडाइज लॉस्ट तो है ही सुपरनैचुरल बीइंग्स के हवाले से. इलियड में, एनीड में, ओडेसी में सुपरनैचुरल बीइंग्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है. वो दोनों पार्टीज की तरफ से लड़ते भी हैं, उन्हें अपने अपने वेपन्स भी देते हैं और उनकी आपस में भी लड़ाई है. थीम हमेशा सबलाइम होता है, बड़ा एक सबलिमिटी वाला होता है ताकि पता लगे कि कोई इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है. देयर इज ऑलवेज ग्रैंडर इन एपिक पोम्स, के हर चीज बड़ी शहाना अंदाज में दिखाई जाती है. इवन वॉर्स में बड़ी एनॉर्मस लेवल की होती हैं, बड़ी फियर्स लाइक फियरसम वॉर्स होती हैं. ब्लड शेड होता है बहुत ज्यादा, और बड़ी प्रोडिजियस किस्म की ट्रेजेडीज होती हैं. यानी कोई छोटे लेवल की ट्रेजेडी नहीं होती एपिक में. देयर इज ऑलवेज अ बिग ट्रेजेडी. So the same happens in Paradise Lost. So अगर हम इसको Paradise Lost को इस हवाले से देखें, it is a long narrative poem, long travel है. Saturn जो है वो आसमानों से इसमें जमीन की गहराइयों में हेल में फेंक दिया जाता है, फिर उसके बाद दोबारा वो उठता है और दोबारा आसमानों पे जाता है, हेवंस के अंदर. गॉड का करेक्टर है, एडम का करेक्टर है, सैटर्न, बील्सबर्ग और सैटर्न के फॉलोअर्स. वेपन गॉड का थंडर है, उसका अपना नेजा है. सुपरनैचुरल बीइंग्स, दोनों सुपरनैचुरल बीइंग्स हैं. Theme है justifying the ways of God to man. Grandeur is always there in the complete poem. Enormous war है पहले, यानी जो fallen angels की good angels के साथ, God के साथ. Tragedy है कि इंसान को जन्नत से निकाल दिया जाता है. So this is a big tragedy जो कि इसमें discuss की गई. So this is what an epic is, and this is how Paradise Lost is an epic. So I'll be coming to questions afterwards. But there are 5 speeches of Saturn which are really very important for any examination. So उन 5 speeches में जो उसके important हैं वो ये वाली हैं. Infernal word, and thou profoundest hell, receive thy new possessor, one who brings the mind not to be chained by place or time. The mind is its own place in itself, can make heaven of hell and hell of heaven. Better to reign in hell than to serve in heaven. Awake, arise, or be forever fallen. So these are all the lines spoken by Saturn in his collective 5 speeches. So Paradise Lost जो है basically उसमें हो क्या रहा है कि we are discussing, whenever we are discussing the hero of Paradise Lost, so आपको ये याद रखना चाहिए कि you will always see कि what the question is. If the question is the hero of Paradise Lost book 1,
So you can agree with Saturn being the hero of Paradise Lost. इसमें अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है तो हाउ डू वी रीड पैराडाइज लॉस्ट, तो उसमें ये है आर्ट फॉर आर्ट सेक. देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, आर्ट फॉर आर्ट सेक एंड आर्ट फॉर मोरालिटी सेक. सो विल बी डीलिंग विद आर्ट फॉर आर्ट सेक, क्योंकि हम इसमें रिलीजियस इश्यूज को डिस्कस नहीं कर रहे. वी आर ओनली डिस्कसिंग द बुक रिटन बाय जॉन मिल्टन, जिसकी 12 चैप्टर्स हैं, एक तरह से 12 बुक्स हैं, और उसके अंदर ये स्टोरी उसने दिखाई. ठीक है, ये गलत है, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद इट, वी आर जस्ट आंसरिंग the question according to the critical approach. अब पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक इन्वोकेशन से शुरू होती है, हर एपिक इन्वोकेशन से शुरू होती है. वी इन्वोक टू सम सुप्रीम डेइटी कि वो हमारी हेल्प करे कि हम उसमें कामयाब हों. सो ये मैं एक शॉर्ट समरी बता रहा हूँ, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. सो पैराडाइज लॉस्ट की शॉर्ट जो इसकी जो बिगिनिंग है, इन्वोकेशन के बाद पहले गॉड की तारीफ की जाती है कि गॉड इज ऑल ओवर प्रिवेलिंग. डव की तरफ उसने बाजू अपने पर फैलाए हुए हैं, हर चीज उसके बस में है. उससे रिक्वेस्ट करता है सैटर्न. बेसिकली जो ये रिक्वेस्ट है, 9 म्यूजेस में से एक जो म्यूज है, म्यूजेस ये ज़्यूस की बेटियां हैं सुप्रीम गॉड की, उनमें से एक जो आर्ट की, पोइट्री की जो देवी है, उससे रिक्वेस्ट करते हैं नॉर्मली पोइट्स अपनी एपिक्स लिखते वक्त. सो उससे भी रिक्वेस्ट करता है, गॉड से भी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इतना बड़ा टॉपिक मैंने चूज किया, जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन, तो मेरी हेल्प की जाए. So the poem really begins with the Saturn's broken condition, broken outlook and diminished condition, कि जब वो hell में thrown down है, उसे फेंक दिया गया, हरा दिया गया. अब जो Saturn है वो जहन्नम में पड़ा हुआ है, उसके आसपास बहुत सारे fallen angels हैं. Saturn को अपनी हार का दुख होता है, और जिस स्टेट से उसे निकाला गया कि कहाँ पे वो एक हुक्मरान था, और अब उसे यहाँ पे जहन्नम में फेंक दिया गया, यानी ऑल टुगेदर 360 डिग्री चेंज आई उसके उस एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे वो मौजूद है. सो वो उठ के पहले देखता है तो उसे अपने आसपास बहुत सारे बिखरे हुए एम्बलम्स नजर आते हैं, झंडे नजर आते हैं, वेपन्स नजर आते हैं, अपने फ्रेंड्स नजर आते हैं, फॉलन एंजल्स, और वहां पे बील्सबब उसका फ्रेंड जो कि नेक्स्ट टू हिम है, वो भी नजर आता है. सो बील्सबब वही है जिसके बारे में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज लिखा गया. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में सिंबॉलिकली लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बील्सबब का टाइटल है. तो जो बील्सबब है उससे वो डिस्कशन करता है कि ये हम कहाँ थे और कहाँ पे आ गए, तुम्हारे चेहरे की रंगत बदल गई, हर चीज चेंज हो गई. सैटर्न लेकिन इन अपनी स्पीचेस में बड़ी पावरफुल किस्म के वर्ड्स यूज करता है, और उसके जो वर्ड्स हैं उसके बड़े जोश दिलाने वाले हैं कि वो एक बार फिर अपने तमाम तर साथियों को खड़ा कर लेता है अपने साथ. हम उसे पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 का हीरो इसीलिए कहेंगे क्योंकि हम इसमें सिर्फ खुदा और इब्लीस को नहीं देख रहे, अल्लाह और इब्लीस को नहीं देख रहे, हम इसमें उस गॉड कैरेक्टर को देख रहे हैं और सैटर्न कैरेक्टर को देख रहे हैं. सो सैटर्न इतनी बुलंदी से नीचे गिरने के बाद, हारने के बाद, ये जानते हुए कि मैं दोबारा लड़ूंगा तो भी डेफिनेटली हारूंगा, उसके साथियों को भी ये बात बहुत अच्छी तरह पता है, बट स्टिल दे गेट अप because of his powerful speeches. They are able to resurrect their all powers, and they are able or they are ready to attack again. So Saturn उन्हें convince करता है, वो सारे दोबारा से खड़े होते हैं. Saturn in the end also uses one thing, that if I am unable to defeat God by dint of my power, I'll be using guile and fraud. So whatever I do, मैंने उसे यहां से निकालना है, क्योंकि हमें पता लगा है कि आसमान, जन्नत और जहन्नम के अलावा एक और जगह भी आबाद हुई है जिसे जमीन कहते हैं. सो हम जाएंगे और जाके अपने आप को फैलाएंगे, ताकत यूज करेंगे या फ्रॉड यूज करेंगे, लेकिन हमने अपना बदला लेना है. सो दिस इज ऑल द डिटेल इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1. पैराडाइज लॉस्ट बुक 9. Now it is about the discussion of Adam and Eve and the plucking of that forbidden fruit, जिसको हम गंदम कहते हैं, अपने रिलीजन में एक्सेप्ट करते हैं उसे, क्योंकि हमें वो बताया गया. इस मिल्टन में, क्रिश्चियनिटी में उसे फ्रूट बताया गया. सो वट एवर द थिंग वॉज, तो मना किया गया ईव को, एडम को, कि तुम लोगों ने उस एक, अब इवन एडम जब मैं कहूंगा तो मैं वो 2 कैरेक्टर्स के नेम ले रहा हूं जो कि मिल्टन ने डिवाइस किए अपनी बुक में. सो उन दोनों को मना किया गया कि डू वट एवर यू वॉन्ट बट डोंट गो नियर दैट पर्टिकुलर फ्रूट. सो बुक 9 के
बिगनिंग में सैटर्न का दिखाया जाता है कि सैटर्न ट्रेवल करता है, एक मैसिव ट्रेवल, और वो जन्नत तक आता है, ईडन, गार्डन ऑफ ईडन, जहां पे एडम एंड ईव हैं, और एक सर्पेंट की फॉर्म में, एक सांप की फॉर्म में वो एंटर हो जाता है. अब गार्डन में एडम इज नॉट सपोज टू लीव ईव अलोन, और ना वो छोड़ना चाहते हैं, बट ईव in a discussion between both of them, she states के अब हमें थोड़ा सा इस एक दूसरे से सेपरेट भी होना चाहिए. और बड़ी प्यारी लाइन वो कहती है कि some solitude sometimes is the best society, कि कई दफा जो solitude है उससे बेहतर सोसाइटी कुछ नहीं होती. So Adam is not convinced, वो नहीं चाहता, उनको पता है कि शैतान सैटन जो है वो अटैक करने के लिए तैयार है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग मे हैपन. सो वो चाहता है कि एडम और ईव इकट्ठे रहें, इस सूरत में अटैक नहीं होगा. बट ईव इज ऑलवेज इंसिस्टिंग एडम कि हमने जन्नत का बाग बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी शाखें जो बेहंगम हो चुकी हैं, अब हम काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमने इस गार्डन को दोबारा से संवारना है, अगर हम मिलके एक जगह पे लगे रहेंगे तो काम नहीं होगा. सो तुम ये हिस्सा संभालो, मैं वो हिस्सा संभालती हूँ. After, despite after forcible sayings of Adam, Eve is not convinced and she moves further separately. So Satan, in shape of serpent, is sitting in the same to find the same chance. So when he finds Eve alone, वो Eve के पास जाता है, and he talks to Eve about all in shape of serpent. So when he speaks, Eve is moved and surprised कि how come a serpent is speaking. कि खुदा ने तो ये बोलने की क्वालिटी, जिस हम लैंग्वेज के बारे में कल डिस्कस कर रहे थे कि लैंग्वेज इज प्राइमरीली ह्यूमन, तो लैंग्वेज तो इंसानों के लिए. हाउ कम अ सर्पेंट इज स्पीकिंग. कोई जानवर नहीं बोल सकता, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते. सो शी वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे मुमकिन है. सो उसमें सैटन बहुत ज्यादा ट्रिक्स यूज करके इन द एंड ईव को कन्विंस करता है कि दिस इज द पर्टिकुलर फ्रूट. एक फ्रूट है यहाँ पे, एक ट्री है जिसको खाने के बाद मेरे ही अंदर ये बोलने की ताकत आ गई, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो फ्रूट. सो व्हेन ईव फॉलोज सैटन, वो उसको वहीं पे लेके जाता है जहाँ पे दैट पर्टिकुलर ट्री इज व्हिच इज फॉरबिडन टू देम. Eve says, no, this is a tree that we are forbidden not to eat, so we should not go near. अब सैटन इस पे मजीद चाल चलता है और वो उसकी ब्यूटी को लेके सामने आता है, उसके अंदर उसको फील कराता है कि तुम्हारी असल में ये फ्रूट तुम्हें खिलाने का, ना खिलाने का मकसद ये है कि मेरे जैसा ब्रूट अगर इसको खाने के बाद बोलना शुरू हो जाएगा तो तुम जो कि पहली बोलती हो तो तुम कितनी ताकत पे आ जाओगी. सो ये ना हो कि तुम गॉड बन जाओ, गॉड के मुकाबले में आ जाओ, इसलिए गॉड मना करता है कि तुम ये फ्रूट खाओ. सो ईव इज कन्विंस्ड और वो उसके बाद वो फ्रूट जो है उसको खा लेती है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एडम आता है, एडम को भी वो फ्रूट खाना पड़ता है बिकॉज ही लव्स ईव्स, और उसके बाद ईव के मोहब्बत में वो फ्रूट खाने के बाद दोनों की, यानी दैट द ट्रेजेडी बिगिंस. सो दीज आर द फेमस लाइन्स के shall that be shut to man which to the beast is open, कि जो बीस्ट को ओपन है और एक इंसान को मना किया गया. हाउ कम दैट थिंग इज पॉसिबल. देन आई ऑफ ब्रूट ह्यूमन, ये ऑफ अ ब्रूट गॉड, कि मैं ब्रूट था, ह्यूमन बन गया, तुम ह्यूमन हो, तुम गॉड बन सकती हो. So saying her rash hand in evil hour, forth reaching to the fruit she plucked, she eat. Earth felt the wound, and the nature from her seed. Sign, so all her works gave signs of woe, that all was lost. So this was Paradise Lost, Book 1 and 9. So in this, what is important is that the temptation scene of Satan and the 5 speeches of Satan that he speaks to convince his people to rise up again and to fight back with God.